अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ओवैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। सेहोनी सोशल मीडिया पर मस्जिद अक्सा को शहीद करने की मुहिम का आगाज। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल। प्यूटिन का ईस्टर के मौके पर यूक्रेन से आर्जी जंग बंदी का ऐलान। कांगो में कश्ती में आग लगने से 148 अफराद हलाक। कनाडा में इलेक्शन प्रोसेस का आगाज, एडवांस वोटिंग जारी। हंगरी की पार्लियामेंट में हमजिन्स परस्ती के खिलाफ कानून मंजूर। और अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन। ये थी टॉप स्टोरीज और अब टॉप स्टोरीज के बाद खबरों की तफसील की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर है खित्ता फ़लस्तीन से। इस हवाले से जो सेहोनी सोशल मीडिया है उस पर एक मुहिम का आगाज़ हुआ है और वो मुहिम है कि मस्जिद अक्सा को जल्द अज जल्द शहीद किया जाए। इस मुहिम का आगाज़ हो चुका है सेहोनी सोशल मीडिया पर, और सेहोनी सोशल मीडिया पर सेहोनियों के कई अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाना चाहिए और उसकी जगह जल्द अज जल्द हैकल सुलेमानी की तामीर होनी चाहिए। इस हवाले से फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने काफ़ी तशवीश का इज़हार किया है और आलमी बरादरी से नोटिस लेने की भी अपील की है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें आलमी बरादरी से कहा गया है कि इस तरह का कोई भी मामला ना मुसलमानों के लिए काबिल कबूल होगा और ना ही मसीहियों के लिए। और इसी हवाले से हमने ये भी देखा कि ईस्टर के त्यौहार के मौके पर जो होली सैटरडे था उस पर बहुत सारे ऐसे मसीही जो कि फ़लस्तीन में रहते हैं वो इबादत के लिए आना चाहते थे मस्जिद अक्सा में, लेकिन इसराइली अफवाज की तरफ से उन पर पाबंदियाँ लगाई गई और उन्हें इबादत के लिए मस्जिद अक्सा नहीं आने दिया गया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों पर हमले भी इसराइली फोर्सेस की तरफ से जारी हैं और ताज़ा तरीन हमलों में 64 अफराद शहीद हुए हैं। आइए इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट देखते हैं। सेहोनी सोशल मीडिया पर मस्जिद अक्सा को गिराने की मज़मूम मुहिम शुरू। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। इब्रानी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सेहोनी आबादकार तंजीमें मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर के पैगामात फैला रही हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक्स पर बयान जारी करते हुए सेहोनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से इस संगीन इश्तियाल अंगेज़ी पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब सेहोनियों ने होली सैटरडे की तकरीबात को भी ना छोड़ा। इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी ईसाइयों पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। मकबूजा बैतुल मक़दस में चर्च ऑफ होली स्पॉल्चर जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम कर दी। ईसाइयों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और मुतादिद अफराद खास तौर पर नौजवानों को दाखिले से भी रोक दिया गया। इसराइली पुलिस ने चर्च पहुंचने वाले ईसाइयों पर तशद्दुद भी किया और मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मसीही बरादरी ने इस इक़दाम को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं रोम, जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मुज़ाकरात हैं उनका दूसरा दौर मुकम्मल हुआ। ये दूसरा दौर पहले तो मस्कत में होना था जो कि ओमान का दारुल हुकूमत है, लेकिन वेन्यू चेंज कर दिया गया था और फिर ये मुज़ाकरात हुए रोम में। रोम में होने वाला जो दूसरा दौर था उसकी सालसी भी ओमान ने ही सरअंजाम दी और ओमान के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर यह मुज़ाकरात का दौर हुआ। और इस मुज़ाकरात के दौर में एक बड़ी अजीब सी बात थी, वो ये कि ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द ये दोनों अलग अलग कमरों में थे और ईरान के हवाले से जो भी पैगाम अमेरिका के लिए होता था या अमेरिका के हवाले से जो भी पैगाम ईरान के लिए होता था वो ओमान के वज़ीर ख़ारजा के तवस्सुत से दोनों कमरों में पहुँचाया जाता था। यानी ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो इस हवाले से पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहे थे। तर्जुमान की तरफ से जब ये मुज़ाकरात मुकम्मल हुए तो बयान जारी हुआ और उस बयान में ये कहा गया कि ये जो बातचीत थी ये मस्बत रही
اور इस हवाले से ईरान के लिए जो जौहरी टेक्निकल कामयाबी है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ लाज़िम है और इस हवाले से कोई बात नहीं हो सकेगी। दूसरी तरफ ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो ईरान बहुत पॉज़िटिव नोट पर कर रहा है और ईरान हर लम्हा ये भी असेस कर रहा है कि अमेरिका का जो इस वक्त मूड है और जो मूड है वो क्या है। अब्बास इराक़ची ने ये बात भी कही कि अगले हफ्ते जो मुआहदा है उसके हवाले से हम कोई भी फ़ैसला करने के काबिल हो सकेंगे और आपको ज़्यादा ना खुश होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते अब इन मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। अब आपको लेकर चलते हैं रूस की तरफ, जहाँ पर ईस्टर के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो ईस्टर के मौके पर यूक्रेन से जंगबंदी कर रहे हैं और ये ईस्टर के ही हवाले से जंगबंदी होगी और ईस्टर के बाद जंग का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। अब इस हवाले से एक टाइमलाइन दी गई है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से और ये टाइमलाइन है कि 19 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक ये जंगबंदी का अमल जारी रहेगा। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से ये बात सामने आई है, बयान सामने आया है कि रूस इस पूरे मामले में संजीदा नहीं है और रूस की तरफ से इस पूरे जो अरसे में जो ईस्टर का जो अरसा जिसके अंदर रूस ने जंगबंदी करनी थी, इस अरसे में भी हमले किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रूस अमन के लिए संजीदा नहीं है। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो, जहाँ पर एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया है और इस सानहे में 148 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। ये वाक़या पेश आया जब एक कश्ती में आग लग गई और इस कश्ती में 500 अफराद सवार थे, जिनमें से 148 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई सैकड़ों जो अफराद हैं वो अब तक लापता हैं और 100 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी जानें बचाई जा चुकी हैं और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि ज़ख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब ये जो कश्ती है इसका नाम है एचबी कोंगोलो और ये मटंकुमो के इलाके से बुलोम्बा जा रही थी और इसमें उस वक्त ये आग लगी जब एक खातून ने इस कश्ती में खाना पकाने की कोशिश की। ये जो कश्ती है ये लकड़ी की थी और इस वजह से इसके अंदर ये खाना पकाने का जो अमल था, आग उसकी वजह से लगी और फिर आग भड़क गई, जिसकी वजह से 148 अफराद जो है वो इस वाक़े में हलाक हुए। और अब रुख करते हैं कनाडा का। कनाडा का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? लेकिन इस वक्त कनाडा में इलेक्शन के हवाले से अर्ली वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो जारी है। जो ईस्टर वीकेंड है उसमें ये लॉन्ग वीकेंड था और इस लॉन्ग वीकेंड में 4 छुट्टियाँ थी और ये चारों दिन अर्ली वोटिंग के लिए मुख्तस किए गए थे कनाडा की इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तरफ से। और जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो नंबर्स ये कहते हैं कि इसी हवाले से अर्ली वोटिंग के लिए पहले ही दिन तकरीबन 2 मिलियन लोग यानी कि 20 लाख लोग ऐसे थे जो कि आए और उन्होंने अर्ली वोटिंग की और अपने अपने वोट का जो हक है वो इस्तेमाल किया। अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले इलेक्शंस से, तो पिछले इलेक्शंस में जो अर्ली वोटिंग का प्रोसेस था उसमें तकरीबन 5.1 मिलियन यानी कि 51 लाख अर्ली वोटर्स थे। उन्होंने इलेक्शन का जो दिन है उससे पहले ही अपना वोट कास्ट कर दिया था। ये एक प्रोसीजर है जो कि कनाडा के इलेक्शन में फॉलो किया जाता है और इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि इलेक्शन के दिन वोट डालने नहीं जाना चाहते या किसी वजह से इलेक्शन के दिन वोट डालने नहीं जा सकते, तो वो लोग अर्ली वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और अपना वोट पहले से कास्ट कर देते हैं। अब ये 4 दिन की जो अर्ली वोटिंग है इसमें इस मरतबा कितने लोग वोट कास्ट करते हैं यह नंबर सामने आएगा, लेकिन अर्ली वोटिंग का जो मामला है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। कनाडा की ये एक बहुत पॉजिटिव बात है कि वहाँ पर पार्टीज़ को अवाम बहुत अच्छे तरीके से स्क्रूटनाइज करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स को और उनकी कैंपेन्स को और उनकी डिबेट्स को फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद फैसला करते हैं कि किसको वोट दिया जाना चाहिए। अब आपको लेकर चलते हैं हंगरी की तरफ, जहां पर एलजीबीटी के मामलात के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं और जैसा कि हमने अपने आपको पिछले प्रोग्रामों में भी बताया था कि एलजीबीटी की जो परेड होती है, जो प्राइड परेड होती है हंगरी में, उसके हवाले से हंगरी के वज़ीर आज़म ने कहा था कि अब हम आइंदा से ये परेड नहीं होने देंगे और इसी हवाले से कानून साज़ी अब मुकम्मल हो गई है। इस कानून साज़ी के हवाले से हमारे नुमाइंदे हंगरी से राजा अरसलान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें बताएंगे कि ये कानून साज़ी क्या की गई है। जी राजा अरसलान साहब बताइएगा। अवैस मंगलवाला में इस वक्त हंगरी बुडापेस्ट से बराह रास्त आपके साथ मौजूद हूँ और चूँकि ये जो
यहाँ की जो हुक्मरान जमात है, वज़ीर आज़म और बान विक्टर, इन्होंने यहाँ जो बुडापेस्ट परेड हुआ करती थी हर साल, उसके ऊपर पाबंदी लगाए जाने के जो ख़बरें मौसूल हो रही थी और बड़े सख्त इकदाम उठाए गए थे। तो अभी आपको बताते चलें कि इस हवाले से इस हंगरियन पार्लियामेंट ने इस का जो कानूनी तरमीम है इसको मंजूर कर लिया है। तो अब आपको बताते चलें कि यहाँ पे ये जो परेड है ये मुकम्मल तौर पे इसको बंद कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। और ये बेसिकली ये जो परेड थी ये हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देती थी। इस हवाले से वज़ीर आज़म और बान विक्टर का ये मौक़िफ़ है कि ये बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है उस हवाले से उसको मुतासर करती थी, तो चाइल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसको मुतासर करती थी। तो इस हवाले से ये पाबंदी लगाई गई है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। राजा अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे हंगरी से, और बात हो रही थी कि किस तरीके से हंगरी की पार्लियामेंट ने LGBT के ख़िलाफ़ क़वानीन मंजूर किए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं अब अमेरिका की जानिब, जहाँ पर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन से हमारे नुमाइंदे सद्दाम तुफ़ैल हमें जॉइन कर रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से न्यूयॉर्क में साइकिल रिक्शाज़ चल रहे हैं। जी सद्दाम, बताइएगा कि साइकिल रिक्शाज़ जो हैं वो न्यूयॉर्क कैसे पहुँचे? यहाँ पर हम देखते हैं कि माजी में साउथ एशिया में हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी साइकिल रिक्शा चला करते थे और लोग उन्हें सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे। बहरहाल वक्त बदला और स्पेशली पाकिस्तान में अब हमें कहीं पर साइकिल रिक्शा दिखाई नहीं देते जो किसी ज़माने में दिखाई दिया करते थे, लेकिन साइकिल रिक्शा आपको मैनहट्टन में दिखाई देते हैं। और ये 1990 यानी 1990 की दहाई के एंड में साइकिल रिक्शा जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए और उसका बेसिक जो मकसद था वो ये था कि ये माहौल दोस्त होते हैं, कि एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है, क्योंकि ज़रा साइकिल रिक्शा जो है वो एक साइकिलिस्ट चलाता है। तो इस बुनियाद पर ये लॉन्च किए गए जिससे पजीराई भी मिली। आप कभी भी न्यूयॉर्क आए, मैनहट्टन आए, आपको ये साइकिल रिक्शा नजर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये साइकिल रिक्शा न्यूयॉर्क का जो सयाती मकाम है, स्पेशली टाइम्स स्क्वायर, फिफ्थ एवेन्यू, सेंट्रल पार्क, इस एरिया की ये सकाफत का हिस्सा बन गया है। सयाह जब भी आते हैं वो इस साइकिल रिक्शा में घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कानून के मुताबिक इनको जो है अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखना है, यानी साइकिल रिक्शा जो है उसकी फिटनेस का खास ख्याल रखना ज़रूरी है, उसके ब्रेक्स यानी ओवरऑल। इसके साथ साथ इनके जो किराए हैं उनमें अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ भी जो मुसाफिर हैं, या अगर हम टैक्सी की बात करते हैं या कोई भी टैक्सी हो, बस हो, मुसाफिरों में नोक झोंक हो जाती है ड्राइवर्स वगैरह से के किराए के ऊपर। तो ये मामला यहाँ पर भी होता है, लेकिन इनकी जो निगरानी करता है वो न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये इदारा इनकी निगरानी करता है। इन्होंने जो किराया है उनका तयन कर रखा है और इसके साथ साथ ये पाबंद है कि अपने साइकिल रिक्शा के ऊपर जो करंट किराए हैं, जो तयशुदा किराया है, वो आवेजा किया जाए वाज़े तौर पे। ये और बात है कि मैंने यहाँ पर कई साइकिल रिक्शा पर वो किराए मैंने देखे हैं, लेकिन कई साइकिल रिक्शा ऐसे हैं कि जिस पर आवेजा नहीं किए गए। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये एक तरह का गाइड का काम भी करते हैं। सयाह जब यहाँ पर आते हैं ये उन्हें घुमाते हैं और इन्होंने अपने जो साइकिल रिक्शा ने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ होता है। इसके साथ साथ एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम उसमें लगाया होता है, जिसमें जो हमने देखा है ये बहुत फनी स्टाइल में कटिंग करते हुए मैनहट्टन और आसपास के इलाकों में, फिफ्थ एवेन्यू और सेंट्रल पार्क इसके आसपास के इलाकों में ये सयाहों को घुमा रहे होते हैं और सयाह भी इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सद्दाम तुफ़ैल, आपने हमें आगाह किया कि किस तरीके से न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के जो इलाका है उसमें साइकिल रिक्शाज जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर सवारी है। अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है जो कि जारी है डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की तरफ से। और पिछले महीने से लेकर अब तक 1500 से ज़ायद तलबा ऐसे हैं कि जिनके स्टूडेंट वीज़ा जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। कुछ तलबा इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत में भी गए हैं। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भी बहुत सारी पाबंदियां ऐसी हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाई जा रही हैं। तलबा का मामला यह है कि जो तालिब इल्म इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाता है उसे या तो मुकदमों का डर होता है या फिर गिरफ्तारी का या फिर डिपोर्ट किए जाने का। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर एरिक कोकर को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ाते हैं और अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है और वो फ़लस्तीन की खुलकर सपोर्ट करते हैं। हेलो डॉक्टर एरिक कोकर,
how are you? Thank you for giving us your time. Hello. Lovely to see you, Ovais. Thank you for the invitation. So, Doctor, let's start with the First Amendment. We know that the First Amendment of the Constitution of the United States of America, it guarantees freedom of speech, it guarantees freedom of protest. So, these protests, which were being carried out by the students at different universities in the United States of America, do you think that these protests were justified, or these protests were fueling hate speech? Thank you for the question. Yeah, I mean, my opinion really goes back to the 1980s it's really grounded in the South African apartheid disclose and divest movement, which was really impactful in terms of shutting down the South African apartheid. And so this is a long tradition at university campuses where young adults are kind of engaging in free speech on university campuses. And the disclose and divest movement for South Africa was kind of the prime example, which these students are really kind of basing their movement on. And so it is wholly in line with the First Amendment protections. Obviously, as I'm sure many of your viewers are aware, that the students being targeted, at least as it pertains to deportation and arrests, really, these are permanent resident holders. If we can talk about particular cases. I'm happy to do that. There's some recent developments worth discussing on that. But as it pertains to permanent residents and visas, the First Amendment protections, the U.S. Supreme Court has established that those protections are indeed extended to permanent residents and visa holders. So, just by the mere fact of being in U.S. territory jurisdiction, they have the protected freedom of speech. The U.S. Constitution does not say it pertains only to U.S. citizens. It's any person, and it's really a constraint on the government. And clearly, constraints on government in the U.S. Constitution are well established, long precedent here. So certainly, what's going on these campuses, whether you're a U.S. citizen or not a U.S. citizen, you do have a right to speak up against Israeli apartheid, the genocide in Gaza. So you spoke about the 80s, and you said that students were allowed at that time to protest and raise their concerns and raise their voices about anything that mattered to them. So, what is the difference now? Why has this whole attitude of the US government changed, and why are students not being allowed now? Well, that's a great question. I'm glad you asked it. It's one that I don't think journalists ask enough. And, you know, I see, two or three main reasons for this. Uh, the first being when you look at US-Israeli relations, since about the 1960s and 50s, the US has viewed Israel as a key ally in the Middle East, right? So there's these different governments post-colonial era that the US kind of favors, at least in terms of international relations and geopolitical politics. Saudi Arabia is one of them. Israel is the main one, however. So that's a main piece to this, right? So students are protesting against the nation of Israel and their actions. And, this is a key US ally in the region. Another very important region is for evangelical reasons, right? Many Christian evangelicals in the United States view Israel as kind of this messianic key ally in relation to the end times, which is something, in my opinion, we probably shouldn't be basing on restricting freedom of speech based on these types of criteria. And then a third element that is probably more pertinent to this discussion here is the role of, influence on the U.S. government through organizations like AIPAC. And so AIPAC is a lobbying group that lobbies essentially on behalf of the Israeli government, and they have immense influence in terms of influencing elections by pouring money into local and national races. In addition, they do direct lobbying. They fund
representatives in the United States to travel to the to travel to Israel and kind of get this one-sided view of what's going on in Israel. And so you have a political class, and you have kind of this religious component to it that is wholly committed to Israel, almost to the extent that they often will elevate the needs of, or the desires of Israel over people in the U.S. For instance, Israel has their own universal health care. In the United States, we don't have that, but so there's these kind of conflicting dynamics that for some reason I think the reasons that I've just laid out, compared to the 1980s, bringing it back to the South Africa apartheid, the U.S. didn't have these kind of very intricate, decades-long ties to the South African regime compared to what's going on in terms of their relationship with Israel. So I think that's what's driving things here. You have really, really ardent, adamant supporters of Israel who are in significant positions of power and trying to impose their will on university students and faculty. Now, on the contrary, if you are pro-Israel and you are lobbying for Israel and raising your voice for Israel, then there won't be any problem for you. So why is this double standard, and what does this double standard tell us about this whole situation? Yeah, I mean, we certainly have seen pro-Israel demonstrations, either kind of happening at the same time as these pro-Palestine actions, and there's actually been instances of, for instance, on the University of California, Los Angeles, UCLA campus, there were clear evidence of video evidence of pro-Israeli activists committing violence against these pro-Palestine activists. Again, it's important to note that these pro-Palestine actions are largely nonviolent, right? They're expressions of freedom of speech. There may be some actions in terms of taking over buildings, but nobody's been injured for the most part. However, on the other side of the coin, there's been injuries perpetrated against pro-Palestinian protesters by Israeli protesters. And so here, this is the essential double standard, right? The position, the rights of Israelis are placed above those of Palestinians. And I think this falls into that, and I'm sure many people from Pakistan are familiar with this idea of Islamophobia. Many Americans, unfortunately, have a large, significant stream of Islamophobia. On the other side, there is not really a phobia in terms of the Jewish religion, and which is a good thing in large part. Jews in the United States are not really kind of discriminated against, and in large part. There may be isolated cases, but you see it so pervasive in the United States, where people of Islamic faith are really mistreated and degraded in a variety of ways. And so I think it's this double standard and racist kind of ideology, where if you think about the nation of Israel, a significant proportion are from Europe, and so there's this colonial relation here going on that is obviously, colonialism is rooted in racism, and so there's a bit of a racism component to this going on, conflate that kind of gets integrated with Islamophobia. So this double standard is highly prevalent in the U.S. culture, and it's been here for quite some time, and so I think that's really at the one of the main drivers of the kind of this discontinuity. So I would also want to listen to your story. How and when did you start the support of Palestine? Yeah, absolutely. So while I was a young adult, I'm no longer a young adult anymore, but kind of in the early 2000s, there, it was kind of during the Iraq War era, the post 9/11 kind of war on terror era. In that early part of the war on terror,
my interest got piqued in terms of the turmoil going on in the Middle East and the U.S. kind of outsized role in the Middle East, and that's when my consciousness became aware about what's going on in Palestine. And so, specific to the event that kind of precipitated my motivations here, it really was rooted in free speech, and it was at a college campus, North Seattle College, or North Seattle Community College. It was then in I believe it was 2003, and what was happening on campus is the MSA, Muslim Student Association, was going to show a documentary on campus, and they were promoting the event, and I believe it was entitled Janine Janine, and it was a documentary about some of the atrocities that Israel committed in the Janine refugee camp. And what actually happened is some outside agitators, so people who are really tried and true Zionists, tried to intervene and stop the documentary film from being shown using kind of conventional ways of targeting kind of people, decision makers at the college, and trying to get the documentary banned from being shown on campus. And initially, they were quite successful. The MSA was going to show the film. But they were told that they can't have this public showing of the film based on the administration decision. However, myself and other fellow activists who were already kind of embroiled in this kind of anti-war movement as it relates to the Iraq War, saw something unjust going on here, a violation of people's freedom of speech. The college saying you cannot show this this documentary, and so we engaged in some activism. We targeted the school newspaper to try to get our message out about what happened, what is going on in terms of the outside influence and preventing the documentary from being shown on campus. And ultimately, we were successful. And I think what I learned from this is that academic freedom, freedom of speech, are the violations of these are heavily intertwined with the Israel-Palestine conflict. And so I learned from the outset, in terms of my activism on Palestine, that freedom of speech and academic freedom are kind of at the front lines of trying to push back against Israeli apartheid and Israeli atrocities committed against the Palestinian people. And so that was kind of like the inception of my involvement in the Palestinian movement. And I learned a lot, and it really informs to this day the issues that I think need to be addressed and paid attention to in this conflict. Right, that's quite an interesting story. And since you don't follow any religion, I would want you to please comment on this, that there are so many people who need to realize that this issue of Palestine, it's not a religious issue, it's a humanitarian issue. Do you think that people need to understand this thing? 100%. I think that needs to be also at the forefront of this conversation. I myself, I don't practice any particular religion. I don't also believe any religion is better than any other. I have no preconceptions about that. And I mean, full disclosure, I was raised in a Baptist Christian family, right? So that was my influence growing up. But I mean, it's not a practice that I continue to this day. That being said, it is really critical to acknowledge that this is not an anti-Semitic movement. This is not a movement against the Jewish people. To the contrary, when you look at the protests, for instance, in Colombia, Jewish Voices for Peace have been very prominent in those protests. Even during the original encampments, they held Friday Seders where they, protected the Jewish students to practice their religion in the midst of those protests. And so it is really critical to acknowledge that this is not this is not a movement against the Jewish people, and and there is this kind of misconception or intentional misleading of the situation where any criticism of the country
of Israel in terms of its policies in relation to the Palestinian people is automatically labeled as anti-Semitic and hatred of the Jewish religion, and that cannot be further from the truth. Every single every single pro-Palestine activist that I've interacted with in my life, this is just an anecdotal story, obviously, but everyone has, they have never expressed any negativity towards the Jewish religion or the Jewish people. It is always kind of it's a very clear line of sight here. We have an apartheid colonial settler state in Israel that is effectively an ethno-state, where they're trying to increase the percentage of the population that identify as Jewish. And so, while it is difficult to disentangle the country of Israel from the Jewish religion, and the very reason why it's difficult to disentangle those or decouple those is, because of the motivations behind the establishment of Israel, right? Where they're trying to depopulate Palestinians in favor of populating the region with people who are Jewish. So, there is an inherent underlying tension there, and I think we need to acknowledge it. While we can acknowledge that underlying tension, we can also, two things can be true, right? Israel is effectively an ethno-state, but its policies are explicitly that of apartheid, repression, control of a population, and colonization of a population. And what we're seeing now, genocide and ethnic cleansing of the Palestinian population. We can critique those policies as, they're all live streamed now. It's much easier to kind of demonstrate those injustices. We can critique the nation of Israel without kind of, somehow this is saying that this is a Jewish problem. This is not a Jewish problem. There may be some Jewish supremacists out there who believe have certain sets of beliefs that are promoting the nation of Israel in terms of their actions against Palestinians, but this is not a Jewish problem. And now, finally, coming to academic freedom, what do you think? How much academic freedom should be allowed in universities, and how much academic freedom is being practiced as of now? And we have also seen this whole scenario where we see that the Trump administration is at a kind of a war with Harvard University. So, do you think that this kind of a situation will arise for other universities in the USA? Yeah, I mean, this is a very unfortunate situation going on in the United States. And I believe it's going on in Canada as well. So we can talk about this as a North American problem as well. But specifically to the United States, how much academic freedom should there be? The universities and colleges are places where it's the marketplace of ideas, right? Where people should be free to express their ideas. They should be free to debate ideas on their merits, to try to unpack people's or kind of challenge people's opinions, right, is really essential. So there are certainly on colleges and universities people who have a very strong pro-Israeli stance, right? And there are people on campuses that have very pro-Palestinian stances. There is no fundamental reason why those opposing positions come into conflict with academic freedom. As I said, universities are places for critical thinking, for the exchange of ideas, and for governments to impose on universities restrictions on that exchange of ideas is really a violation of academic freedom. And academic freedom is essentially what academic freedom is. As a researcher, as a faculty in a university or college, you have the right to study topics and explore them and kind of unpack them and explain them in ways that are informed by history, public policy, philosophy. There's various ways to talk about these highly inflammatory geopolitical issues in ways where there can be freedom of expression in terms of academic scholarly work. And what we see happening in places like Columbia, where the Middle Eastern Studies
department is being kind of forced to go into receivership, there is a long history of academic freedom in Colombia as it pertains to the Middle East. Academic scholars have gone through that institution, just as Mahmoud Khalil has gone through the institution. That have really advocated for Palestinians, and because of that long history of academic freedom as it pertains to the Palestinian issue, that's why that institution is being targeted. And this is an affront to academic freedom, is an affront to freedom of speech, and it's something that we need to push back on significantly. And I'm happy to talk more on the particulars of the capitulation in terms of Columbia University and how they've capitulated to Trump's demands. But broadly speaking, there's been a long history in the United States of university faculty being fired from their positions. Norman Finkelstein, who is a noted Palestinian historian, a scholar, was forced out of a position. But this has happened in a myriad of ways throughout the United States. So it's a long-standing problem. It's just on a grander scale and exacerbated now since October 7. Thank you, Dr. Eric. Thank you for your time and for your comments. आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।